Hi everyone, welcome to goclasses. I am Pragati Yadav. I had appeared for GATE in this year. It was my first serious attempt, in which I got All India rank 285 in GATE CS and 596 in GATE DA. Now I will be joining IISc Bangalore for MTech in Computer Science. So, welcome to another mentorship session. How we go about it is that all of you can raise your hand one after the other for whatever doubts you have or any blockers you are having in your preparation, or if you just want to discuss your strategy or how far you have come and how you want to proceed. Anything you want to discuss, just raise your hand and we will continue discussing one after the other. Okay. Hi Suman. हाय हेलो। एक्चुअली मेरी आपसे पहले सेशन में भी एक बार बात हुआ था कुछ दिन Okay. पहले। तो Hmm. मैं एक्चुअली लेट स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन। अभी जून से एक हफ्ता ही हुआ है मुझे स्टार्ट करे हुए। तो मेरा इशू अभी तो ये चल रहा है कि कंसिस्टेंसी को लेके मतलब Hmm. सब्जेक्ट का लेक्चर्स तो देख ले रहा हूँ, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, पर Hmm. मतलब वीकली क्विजेस देने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर मन कर रहा है Hmm. नहीं देने का। क्योंकि मतलब लेक्चर कंपटीशन पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ रेदर देन सीखने का। तो ये गलत अप्रोच ही है। पर ये भी है कि Hmm. लेट हूँ तो मतलब लेक्चर्स भी कंप्लीट करने होंगे। तो कुछ मतलब Right. आपका सुझाव मिल जाता तो। ओके, आप अभी कौन से लाइक क्या कर रहे हो? कॉलेज में हो तो विच ईयर या फिर ड्रॉप? मैं अभी ड्रॉपर ही हूँ। मेरे लास्ट ईयर है, मैं एमसीए परसू कर रहा था। तो एमसीए ओके। का लास्ट सेमेस्टर मेरा खत्म हो गया है। तो ओके। अभी तो मैं फुल टाइम ड्रॉपर ही हूँ। ओके। टारगेट कर रहा हूँ मैं एक मतलब एमटेक करने का किसी भी टॉप आईआईटीज या आईआईएससी से। सो राइट। या ओके, सो फर्स्टली आई डोंट थिंक कि आप ऐसे लेट हुए हो। मैंने भी लाइक जून में ही अराउंड दिस टाइम ही या कुछ दिनों बाद ही इनफैक्ट स्टार्ट किया था। मे बी ये डिफरेंस हो सकता है कि मेरा बीटेक था तो सब्जेक्ट्स मेरे लिए बिल्कुल न्यू नहीं थे। थोड़ा बहुत तो मैंने देख रखा था। राइट, ऐसे टर्म्स जैसे कोई भी है तो आई वाज फेमिलियर विद द टर्म्स, ऐसा बिल्कुल न्यू नहीं था। बट टाइम वाइज आप लेट नहीं हो, अभी भी 7 मंथ्स है। एंड एक्चुअली 10 मंथ्स करने के लिए 7 मंथ्स इनफ है। इट्स जस्ट दैट वही कंसिस्टेंसी वाली बात है कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी और अटेम्प्ट्स है या लाइक इफ दिस इज योर फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। अभी आपने कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करा है? मैंने अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और पैरेलल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है। डिस्क्रीट का प्रोपोजिशनल लॉजिक हो गया है, उसका मैं हाँ। वीकली क्विजेस दे रहा हूँ। पर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अभी तो बस स्टार्ट ही किया है, एक लेक्चर देखा हूँ अभी आप जस्ट। सीएस दोगे, गेट सीएस? हाँ, गेट सीएसएम दूंगा मैं। और ओके। मैं फेमिलियर हूँ उस मतलब जो हाँ। चैप्टर्स है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टर्म्स है, उससे भी। पर गेट राइट। लेवल का नॉलेज तो मुझ में नहीं है ऑब्वियसली। तो हम्म। हाँ, यही यस। है मेरा केस। हाँ, तो ऐसे मेरे मेरे लिए भी सिमिलर ही था। तो एक जो मैं सजेशन दे सकती हूँ आई थिंक, क्योंकि अगर आप पूरा मैथ्स ही लेके चलोगे लाइक इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स, तो वो पूरा एक बार में खत्म करने में आई थिंक टाइम लगता है, क्योंकि मैथ्स बहुत लेंदी है, राइट? हाँ लाइक लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी सब अपने आप में ही बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं, राइट? इंजीनियरिंग मैथ्स के और डिस्क्रीट के भी काफी टॉपिक्स हैं। तो इफ पॉसिबल हाँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई कोर सब्जेक्ट उठा के, लाइक जो मैंने फॉलो करा था वो ये था कि मैं कोर सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, राइट? लाइक मैंने डीबीएमएस करा सपोज, तो वो कंप्लीट हो गया। तो बीच में ऐसे, क्योंकि ये सब छोटे टॉपिक्स है कंपैरेटिवली, जैसे मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर किया था, तो ग्रुप थ्योरी हम्म, के और ग्राफ थ्योरी के जो ऐसे टॉपिक्स हैं, आई थिंक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अबाउट 7 टॉपिक्स हैं, जहाँ तक आई हाँ रिमेम्बर। तो मैं टॉपिक लिख लिए थे मैंने, और मेरा गोल था कि मैं एक कोर सब्जेक्ट के साथ जब भी बीच में एक कंप्लीट हो रहा है तो मैं एक या दो टॉपिक्स उठा के कंप्लीट कर लूंगी। लाइक अगर मैंने पूरा सीओए खत्म कर लिया
तो अब ऐसे थोड़ा हम्म। प्रॉपर उसके जस्ट बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक कर लिया, उसके साथ ग्रुप थ्योरी कर लिया, एंड फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क या कुछ उठा लिया। क्योंकि पूरा मैथ्स एक साथ में ना, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो वो रिवाइज भी करने पड़ते हैं। अब अगर आप पूरा हम्म। इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे हो फिर रिवाइज भी वही सेम चीजें कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, जिससे स्पीड कम हो सकती है आई वुड से। तो हम्म। और इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है ऑटोमेटिकली लेक्चर्स देखने में। राइट, क्योंकि हाँ। आप मैथ्स इकट्ठे किए जा रहे हो, फिर डिस्क्रीट मैथ्स भी वैसा ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कोर सब्जेक्ट उठा लो और आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे फिक्स करने का ट्राई करो कि अभी जून है तो जून एंड तक आपको ये वाला कोर सब्जेक्ट खत्म करना है। सपोज आपने कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट किया, तो आपको ऐसे टारगेट रखना है कि मैं इतने दिन या मतलब अभी से लेके 1 मंथ में मुझे कंप्यूटर नेटवर्क खत्म करना है। उसके साथ मान लो हम्म। सी प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी है तो वो खत्म करना है। एंड उसके बाद डिस्क्रीट मैथ्स के 2 टॉपिक्स करने हैं। मतलब थोड़ा ऐसे मिक्स करके, आई थिंक अगर आप ऐसे बहुत सब्जेक्ट्स भी लेके नहीं चलने, बट हाँ आई वुड हम्म। से कि आप कोर के साथ ऐसे मैथ्स करो। क्योंकि अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे होते ना, लाइक मे बी थर्ड ईयर से कर रहे होते ऐसा कुछ, या फिर हाँ। अपने सेकेंड ईयर से, लाइक इन द सेंस आपके पास ज्यादा टाइम होता, तो ये कर हम्म। सकते थे कि मैथ्स बड़ा है तो पहले उसे कंप्लीट कर लो। बट अभी आई थिंक मैथ्स में काफी टाइम लगेगा करने में। एंड होगा क्या कि अगर आप पूरा मैथ्स खत्म कर रहे हो ना, तो आपके 1 1.5 या 2 महीने बाद आपकी सिर्फ मैथ्स ही कंप्लीट होगी। तो आपको लगेगा कि इतने टाइम में मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट किया, अभी भी 8 9 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है। तो वो मेंटली थोड़ा हम्म। चैलेंजिंग लगता है। तो और सेकंड थिंग ये कि आपने जो बोला लेक्चर्स ऑफ कोर्स समझ के ही करने हैं, क्योंकि लेक्चर्स अभी समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अभी समझ लोगे तो एटलीस्ट आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने लेक्चर अभी ऐसे ही देख लिया और कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आपने ध्यान से फोकस में ना सुना हो और वो बस ऐसे ही कंप्लीट हो गया, तो आपको बाद में हम्म। काफी प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है कि आपको लेक्चर वापस देखना पड़े। तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई कोर सब्जेक्ट लेके उसके साथ में मैथ्स ऐसे बीच बीच में टॉपिक वाइज करोगे, तो मे बी आपका इंटरेस्ट ज्यादा बना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर कंसिस्टेंसी आई फील लाइक ये 7 मंथ्स कम्प्लीटली इनफ है गेट में। इनफैक्ट सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लाने के लिए भी इट्स जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट? जिसके लिए वन हम्म। सजेशन इज अगेन कि आप अपना फोन वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। इनफैक्ट बिकॉज यू आर अ ड्रॉपर, तो ये दिस ईयर इज वेरी important for you, एज एन आपको यस। एटलीस्ट अपना बेस्ट तो देना ही है। अब एग्जाम में वट एवर हैपन्स दैट्स डिफरेंट, बट वी वी ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग आवर बेस्ट। क्योंकि आप हम्म। अभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और थोड़ा भी टाइम वेस्ट होगा ना, तो आई कैन टेल यू कि जब एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो यू विल फील अ लॉट ऑफ रिग्रेट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि आप ये डिफरेंटली कर सकते थे या फिर ये अलग कर सकते थे। बट इफ आप अभी अपना हाँ। बेस्ट दोगे तो एटलीस्ट वो सिचुएशन नहीं आएगी। देन आपको अपने आप में कंटेंट रहता है कि एग्जाम जैसा भी गया आई डिड माई बेस्ट। तो इसलिए अभी प्रिपेयर लाइक दैट। तो बी कंसिस्टेंट। फोन तो आप बिल्कुल हटा दो, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन ऐसे लगता है कि फोकस कम है, बट इफ यू गेट रिड ऑफ योर फोन कम्प्लीटली देन इवेंचुअली आपके पास कुछ होगा नहीं टू वेस्ट टाइम। और ब्रेक लेने के लिए यू विल डू प्रोडक्टिव थिंग्स, लाइक यू कैन टेक अ नैप या फिर थोड़ा ऐसे यू कैन गिव टाइम टू जिम और वॉकिंग और एनीथिंग लाइक दैट, दैट इज ओके। बट आई फोन पे आप फोन पे टाइम देना बंद कर दो, तो अपने आप वो फोकस इम्प्रूव होगा, राइट? एंड लेक्चर्स आपको समझ के ही करने हैं। आई फील कि वो लगता है कि आप अगर लेक्चर्स इनफैक्ट टाइम दे के भी करोगे ना, तो भी इतना नहीं लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है। आप स्पीड ऐसे थोड़ी वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो, समझ आएंगी चीजें। और नोट्स मत बनाना, आई वुड रिकमेंड जो एनोटेटेड नोट्स है वही रेफर करना। तो आप लेक्चर देख रहे हो तो बस एक रफ नोटबुक और पेन के साथ बैठो, एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व करते रहो एंड जस्ट गो लाइक दैट। एंड अपने दिमाग में ऐसा फोकस रख लो कि 10 सब्जेक्ट्स है बस, आई हैव टू कंप्लीट दिस एनी हाउ बाय नवंबर, इस टारगेट के साथ चलो। तो आप सब्जेक्ट्स करो। ओके। और अभी आप लाइक इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक एक हम्म। सब्जेक्ट खत्म करने में आपको टाइम लगेगा काफी। तो आपके पास पीवाईक्यूज, मतलब आप अभी कोर सब्जेक्ट अगर कर रहे हो तो आपने एक या दो, आपके काफी टॉपिक्स थोड़े जल्दी कवर होंगे। फिर जब आप आगे के सब्जेक्ट्स उठाओगे तो आप पहले वाले के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप लेक्चर्स समझ के कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। पीवाईक्यूज का सेंस तभी बनता है जब एटलीस्ट आपने 1 2 सब्जेक्ट्स कर लियो। जब तक एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक पीवाईक्यूज मत करना, राइट? उसके बाद फिर ओके। वीकली क्विज के लिए भी टाइम निकाल सकते हो कि ये दिन, मतलब दिन में टाइम फिक्स कर लो कि जब आपका, जैसे आप सुबह उठ के अगर आप में ज्यादा फोकस रहता है तो उस टाइम आप अपने हम्म। लेक्चर्स के लिए रखो। इवेंचुअली तो आप अभी जस्ट शुरू किया है आपने, तो आप पूरा टाइम लेक्चर्स हम्म। ही देखो। जब 1 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिन में 2 3 घंटे पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए रख लेना।
एंड अभी भी वीकली क्विज या ऐसा कुछ करना है तो फिक्स कर लो। डेज फिक्स रख लोगे तो आपके लिए भी इजी होगा, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहोगे ऑलरेडी कि लेक्चर के अलावा मुझे इतना टाइम तो देना ही है क्विज पे, क्योंकि प्रॉब्लम हाँ। सॉल्विंग भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हो। हम्म। ओके। ठीक है। यस। राइट। ओके। हाय सार्थक। Hello, hi Pragati. यस। Yes, I'm preparing for GATE 2027 CS, and या। I have applied for GATE in third year, final year, and this year I'll be preparing for with the full-time job. ओके। I have appeared like thrice before, but I could not get as expected results. ओके। Every time I used to start like with the full confidence, and I used to plan very thoroughly. But after some time, I used to get inconsistent. Like when I started in third year, whichever या। subjects I have prepared, I got like around 90% to 95% score in those subjects. But या। uh, I I was unable to complete my syllabus. So, whichever subjects I have completed in third year, final year I left those and started new subjects. But in the initial days, I used to pick those subjects and used to spend 3, 4, 5 months on the same. And later in rush, या। I used to complete rest the subjects. So this year I'll be preparing the job, and I've started with COA and DM with two subjects. ओके। In the month of Feb, I've started, but still I'm doing those subjects. So this year also I'm doing the same mistake. So what I do, and every year I used to purchase test series. Like I will take या। PYQ test, weekly quizzes. But after one two test, motivation is like I won't give any test. So what should I do different from other attempts this year? So या। please guide me. Right. So you started with COA and DM in Feb. So have you completed like COA at least, or like both are still ongoing? I'm almost done with COA. Last topic is Okay. floating point Okay. representation. So right. So are you making notes also along with? No, I'm preferring annotated notes. All right. So Yeah. have okay. And another question, that have you completed like all these subjects? Like have you covered them in your previous attempts? I have covered OS, C, Okay. DS, Algo, digital logic, and TOC Okay. in previous attempts. Okay. So like almost that's half of the syllabus you have. Right. So Yeah, did you do it from Go classes or somewhere yeah. else? I have mm, I have prepared from co-classes only, but in Or different year, like a few subjects in third year, few subjects in yes, final year, yes. and few sub yeah. Okay. So did you make notes for them, or you were referring Till annotated last notes? year, till last year, I have my own notes, but this year like I'm not preparing any notes. Just Okay. pausing the and solving the questions. Right, that's good. So for I would say that COA, if you're almost complete with, now next you can pick maybe compiler design or computer network, whatever subject. And while you watch lectures for that, then keep solving PYQs for the ones that you have completed, like COA, which is in this case. And for discrete maths also, again, I would say don't wait for entire maths to finish before you pick up the next subject. That's one thing. Another is that since you have almost covered like half of the subjects, which is C, DSA, TOC, digital logic, and OS, right? So that's Yeah, 5 subjects. You can pick any two. Like first focus on revising them, the entire notes, because you already have the long notes. You can maybe pick up operating system, right? And you can revise it. Either you could revise the entire subject, or because you have already done it once, you could do topic wise. So suppose you do memory management, then revise that entire topic properly, and then solve PYQs of that topic once you're done revising. And yeah, right,
So you should be having subject wise as well as topic wise PYQs sorted. So Yeah. either you revise entire operating system first and then solve PYQs of OS, or do it topic wise. And once you're done with OS, then you can start with C and DSA, or in any sequence, but just so you get an idea. So for C and C, Yeah. I don't think there is like much theory that you will need to revise. It's mostly logic based, and you will figure things out only once you solve questions and the programs. So not much theory there. So for C and DSA also, you could start straight with PYQs. And if you feel like there are certain questions that you're not able to solve, and there is you have you written that in your notes, then you can revise, because C and DSA, I did not prepare it from any YouTube video. That's why I don't know what's covered in the lecture for you. So if you think that's related, there is important theory over there, then revise and solve PYQs. So one aspect would be this revision of subjects and PYQs, and this should be in parallel with you covering the new subjects, because again 50% of the syllabus is still left. And what you Yeah. should do differently is that every subject is equally important for gate exam, right? So almost if there are 10 subjects and 100 marks, almost all more or less carry, some carry maybe 5 to 6 marks, some are 8 to 9, but more or less every subject is important. And even a 1 mark difference creates a huge gap in rank. It could be like hundreds of rank Yeah. apart Yeah. with just 1 mark. So coverage of 100% syllabus is extremely important. I don't recommend even skipping a single subject. So one thing was that you were not able to cover your syllabus. So this time already be prepared that no matter what, you have to complete all 10 subjects. And by completing, I mean that uh, doing the entire theory, then all the PYQs along with at least one round of revision for all the subjects. This should be done by November maximum, right? That should be your target. For you, I think you should be targeting in the next 3 4 months. You should be like, yeah, by November only target to complete all these subjects. And for as far as these another thing you could do is that once you revise, suppose you are done with C and DSA, then you could take the test series and you can give subject wise test and topic wise test for these subjects, the ones you have already covered, and you keep on whatever subjects you keep on covering. Because these if you want to test whether your knowledge, whether you have learned from the lectures or not, that you can do from PYQs. If you have revised everything, and even then if you're not able to solve PYQs at all, you're able to do only 10%, then you can still doubt yourself that whether or not I've understood things. But for subject wise test or any test which you are giving, please try not to get demotivated or don't judge yourself, because initially everyone gets really bad marks. Like when you're just starting, it is just not possible for anyone to score good. My score in the first test was around 28 something in the mock test. So if you are another thing that you should do differently for this attempt is that once you give a few mock tests and your score is not that good, don't get demotivated and stop it there. Because covering syllabus is one thing, but then what defines your rank is how you're consistently giving mock test. Because you need to improve in the mock test also, and that happens only when you analyze all each and every of the 65 questions that are there in the test. So you have to do that, and analyzing is only possible if you have watched all the lectures and solved PYQs and given topic wise test earlier. Then only in the full length mock test you will be able to analyze properly. So first phase of your preparation is completing 100% syllabus, and try to give topic wise and subject wise test. All the questions which are there in those tests, there is so much to learn from each and every one of those questions. Because I remember I didn't have much time, so I was not able to give all the subject wise and topic wise test. But whenever I did, even for subjects which I was very confident about, like C programming, even in those I was not able to score even 50% in the first few tests which I gave. Because those, like every question has some trick to it, right? From every question you will be learning something new. Yeah. So those are very important. That's not for you to test your knowledge or anything, or to see where you stand. That's only for you to learn new things. And whatever concept you're learning from there, you should be writing those and revising that as well.
So with test also, I would only suggest that don't get demotivated. Just look at it in a way that you are learning something new from those tests. Okay. All So, right. Yeah. yeah, as I'm preparing with job, so can I do one thing like take one subject I've already covered and take one new subject so that I won't need to watch lectures of both of them. So I could cover my syllabus and revise the covered subject easily. So can I do in such way? Because I have Yes, right, already right. spent What? around Yeah. 4 months already on COA and DM. So Yes. See, so yeah, yeah, right. You should be doing that, but again, you have to, like, either you have to cut down on your sleep hours or other things, or give more time to studying. Because I would say that 4 months for COA and discrete maths overall is still a bit too much when you have just 1 year for the exam. So you have to pick a bit of speed as well, but at the same time it doesn't mean that you have to rush your lectures. Just set a time. You have to figure out that you have to complete 10 subjects by November. Now it's up to you how you plan it out. So you have to set targets, because until and unless you don't give yourself targets, you will not have a structured routine to complete your syllabus. So maybe you should target that if by July you will be covering, by July, and two new subjects should have been covered. New in the sense, either you take one like operating system, which you have already done, and one you can pick computer networks, which is a core subject. So you can do these two, or you could be revising POC along with any maybe computer networks. So now you have done computer networks also, you have revised TOC, and next you can start with compiler design, because for compiler design it's better if you have the knowledge of TOC. So you have to plan it out that way, and you have to be more focused and consistent, I would say, because 4 months is a lot of time. I'm not saying that now it's too late. You still have a lot of time, 7 months, and half of your syllabus is also already done. So it won't be like it's completely new for you. Even the resources were completely the best resources, so you did not even miss out on anything in your notes, right? And you have yeah, your handwritten notes, so it's pretty good, I would say. It's just that you'll have to give more time, and on weekends when you're free, you should ideally be giving your entire day only to the preparation, because you are doing it along with job, and you have comparatively lesser time. So you have to adjust it by making up in the study hours. So definitely yeah, take one you've already done. So yeah, just make sure to complete all 10 subjects along with PYQs, right? yeah, sure. And subject wise, right? And when once you have revised about 5 subjects along with PYQ, I think you can start with test series also. Test series in the sense the subject wise and topic wise test. Mock test you should start in November. I think November is fine. Just complete the syllabus before that, and do it with full focus. Understand, like, getting knowledge is the utmost priority, right? So don't think that how Yeah, many subjects are important for gate, or how much should you cover. Just know that you have to do all 10 subjects, and you have to do it wholeheartedly, right? yeah, right. So yeah, so once you start Yeah, enjoying it, then automatically things will fall in place. And whoever asked earlier about you know uh, lack in focus, so once you if anyone faces that, then I would say that once you remove the pressure of gate exam, that you're doing it for this exam and this is your full and final attempt, instead of that, just think that because these lectures are, honestly, I found it very fun while studying. I always used to feel that I learned something new, and in the sense of, in terms of computer science, I felt like I'm learning so much. So do it for the knowledge also. That will help, especially if you have to be in this field, then you are learning a lot. So just know that you are gaining very good things, and you're doing good with your time. So give yourself credit also for that. Don't think like too much is at stake and all. Don't think about the exam too much. Okay. okay. Yeah, thank you, Pragati. All right. Okay. Hello, ma'am. Yes, hi, Mayank. First of all, congratulations for IISc. Thank you.
मैम, ये मेरा अभी गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो मैम आप हाँ, बता सकते हैं मुझे रिवीजन के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा लास्ट में, एंड में कितने महीने एटलीस्ट? आप अभी कौन से ईयर में हो? मैं अभी या फोर्थ फिर फोर्थ सेम में। फोर्थ सेम? हाँ। तो आप अभी थर्ड ईयर में एंटर करोगे मतलब? हाँ, नेक्स्ट। ओके। सो अभी आपने जस्ट स्टार्ट करा है? मैम, मेरे 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं: डिजिटल लॉजिक, सीओए एंड सी प्रोग्रामिंग। ओके। आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो? मैम, मुझे 3 महीने हो गए। ओके. हाँ। All right. So you have a lot of time. You can utilize it really well, right? तो आपके 3 हो गए सब्जेक्ट और ओके. सो रिवीजन के लिए आपको एंड में ऐसा कोई टाइम नहीं है. रिवीजन आई वुड से कि आपको साथ में लाइक जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते जा रहे हो, रिवीजन भी आप साथ में ही करते हुए ही चलना. सो अगर आपने अभी 3 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, कौन कौन सी किए थे? डिजिटल लॉजिक, सी एंड डिजिटल, सीओए एंड सी प्रोग्रामिंग। ओके. तो अ, तो आपने 3 काफी ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट आपने भी 3 कर लिए, राइट? तो अब आप जो भी कर तो इसके पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, लाइक अभी आपने 3 सब्जेक्ट्स जो किए हाँ, हैं इनके पीवाई मैम मैं टॉपिक वाइज हाँ, भी कर लेता हूँ, पीवाई क्यू एंड सब्जेक्ट के एंड में भी कर लेता हूँ। ओके. सी पीवाईक्यूज जब आप वैसे लेक्चर देख रहे हो तो उसके साथ में पीवाईक्यूज तो कवर हो ही रहे होते हैं. तो आप एक बार हाँ। जब पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लो उसके बाद ही पीवाईक्यू स्टार्ट करना. क्योंकि उससे क्या होता है, लाइक आपने जैसे पूरा सीओए खत्म कर लिया, उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज शुरू करोगे, पैरेलली आप अपना नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दो. लेकिन अब जैसे आप सीओए पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कर चुके हो, तो अब जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिवीजन तो तभी हो जाएगा. क्योंकि एंड तक आते आते यस। स्टार्टिंग का आपको याद है कि नहीं वो तभी समझ आएगा जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे. इसलिए एक बार सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद ही लाइक पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करना चाहिए. तो एक चीज तो ये हो गई, एक रिवीजन ऐसे होगा. उसके बाद जैसे अब आप जो भी नया सब्जेक्ट कर रहे हो, 1 महीने बाद आपको लगेगा कि सीओए अब आपको इतना याद नहीं है, या फिर डिजिटल लॉजिक याद नहीं है, तो उसी हाँ टाइम पे फिर आप अपने आप नोट्स बना रहे हो या फिर एनोटेटेड नोट्स यूज करोगे? मैम, मैं पहले बना रहा था लेकिन अब मैंने बंद कर हम्म. दिया है, उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं। राइट. तो आप फिर जो भी नोट्स हैं अगर बना रखे हैं तो वो, अदरवाइज जो एनोटेटेड नोट्स की पीडीएफ है वो खोल लो पूरी एक सब्जेक्ट की. लाइक फिक्स कर लो कि अभी नेक्स्ट 2 या 3 दिन के अंदर मुझे सीओए कंप्लीटली रिवाइज करना है. जो भी 1 महीने बाद है, जब भी है, वेन एवर यू फील लाइक, ऐसा कोई फिक्स नहीं यस। है. तो आपने फिर सीओए खोल लिया और सारे जितनी भी उसकी पीडीएफ्स हैं, और एक गो में ही आप ट्राई करना कि खत्म कर दो रिवीजन. लाइक फर्स्ट हाफ में अपना नया सब्जेक्ट पढ़ो और सेकेंड हाफ में लाइक दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवीजन के लिए रखो. और फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे करके एक लाइक कंटिन्यूटी में ही एक सब्जेक्ट का रिवीजन फिनिश कर देना. तो ऐसे करते करते आप बीच में जब आपको लग रहा है कि, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि आपको सारी चीजें याद है, बीच में अपने आप ही जितनी बार टाइम मिल रहा है उतनी बार रिवाइज करते रहना. लाइक मैंने तो फोर्थ ईयर पूरा यस। मेरा बीटेक खत्म हो गया था, उसके बाद गेट का प्रेप स्टार्ट किया था जून में. स्टिल मैं नवंबर तक 2 या 3 बार सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर चुकी थी. तो आपके पास तो बहुत टाइम है. तो रिवीजन का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. रिवीजन का पॉइंट है कि आपको हर टॉपिक और हर सब टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे याद होने चाहिए. याद नॉट इन द सेंस कि पूरे रटे हुए हो, बट ऐसा कि आप फेमिलियर हो, आप भूले नहीं हो और आपको सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हाँ। याद हैं. और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डायरेक्ट होते हैं, लाइक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, या फिर एक फिक्स्ड ही मेथड होता है और उससे हर बार मोस्टली क्वेश्चंस आते भी हैं. तो वो सारे कैसे सॉल्व करने हैं वो यस। आपको याद रहने चाहिए. तो जब आप एनोटेटेड नोट से रिवाइज कर रहे हो तो उसमें जितने भी सर ने पीवाईक्यूज बीच में करा रखे हैं या फिर जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी रिवाइज होते हैं. तो फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा रिवाइज करने में, और बट जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे वैसे वैसे कम होगा. तो जब आपका जैसे थर्ड ईयर वाला गेट अटेम्प्ट अभी आएगा, उसके बाद फोर्थ ईयर, वैसे तो यस। आपको थर्ड ईयर ही टारगेट करके देना चाहिए कि इसमें हो हाँ जाए. मैम, मैं तो राइट, तो आपको थर्ड ईयर ही टारगेट करना चाहिए क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो गए विद पीवाईक्यूज. तो आप आराम से कर सकते हो, राइट? तो अगेन रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल.
और उसके बाद जब आपके पास 5-6 सब्जेक्ट्स हो जाएँ कोर वाले सारे 6-7 सब्जेक्ट्स, तो फिर आप टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ टेस्ट है, वो देना स्टार्ट कर देना। तो एक रिविज़न फिर आपका तब होगा, पहले वाले के जब आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट दोगे, तो अगर टॉपिक नहीं याद है तो टॉपिक रिवाइज़ कर लेना और फिर टॉपिक वाइज़ टेस्ट देना एंड देन सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट। ये जब आपके आधे सब्जेक्ट हो जाए, अभी 2-3 सब्जेक्ट्स और हो जाए, उसके बाद ये करना स्टार्ट करना। एंड फिर इवेंचुअली जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होगे नवंबर में, तो टेस्ट सीरीज़ दी, वो उसका एनालिसिस करो, साथ में अगेन अगर हो पाए तो शॉर्ट नोट्स हैं वो, या फिर लॉन्ग नोट्स रिवाइज करना। तो अगर आप ऑलरेडी अभी रिवाइज करते हुए चल रहे हो, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इन रिविजन। और अभी जब आपका लेक्चर खत्म हो रहा है ना, तो एक बार पीडीएफ जो है एनोटेटेड नोट्स की, वो तभी पूरा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अभी नहीं देखोगे तो बाद में वो बहुत यस। कंफ्यूजिंग लगता है। एक बार आपने लेक्चर के जस्ट बाद देख लिया, हाँ। तो आपको रिविजन में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है? तो अगेन एंड में आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, वो आई वुड से कि करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रिवीजन आप बाद के लिए रख ही नहीं सकते कि आप पूरा बाद के लिए छोड़ दो। रिवीजन आपको अलोंग द प्रिपरेशन ही करना है। जब आपका लास्ट सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तब तक पहले जो हो गए हैं वो हाँ। 1 या 2 बार आपके रिवाइज हो ही जाने चाहिए। और ये सब मिला के आपका विद पीवाईक्यूज़ नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक ट्राई करो कि हो जाए, क्योंकि उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जैन 3 महीने में आपके पास लास्ट वाले सब्जेक्ट्स की आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर जो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, फिर एआईएमटी स्टार्ट होंगे, और एक और बार उस 3 महीने में यस। भी ये सब टेस्ट देते-देते जो आपको लग रहा है कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नहीं बन रहे, वो सब्जेक्ट रिवाइज़ करते हुए चलना इन दैट वे। और अभी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, या इन द सेंस जो नहीं हो रहे हैं, उसको सर्कल करते हुए चल लो। और इफ पॉसिबल तो बाद में, क्योंकि अगर आपको बाद में एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज रिवाइज करने हुए, तो आप वापस से सारे तो नहीं कर पाओगे। तो जो मेन वाले हैं, जो यस आपको मैम। लगा कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के, या फिर जो आपसे नहीं बने थे पहली बार में, वो सब सर्कल करते हुए चलो, ताकि आप उसे भी रिवाइज कर पाओ। ओके। और एक और ओके चीज़ है मैम। कि हाँ। अभी जब आप 1-2 सब्जेक्ट और करने के बाद जब आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तो उसके क्वेश्चंस मोस्टली नहीं बनते हैं। देखो, पीवाईक्यूज़ तो अगर आप कर रहे हो, तो आपसे अगर 70% के अराउंड क्वेश्चंस हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने वो यस सब्जेक्ट मैम। अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है? जो बचे हुए हैं, इट्स ओके, उसका सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। अगर जो बचे हुए 30% है, उसका आपको सॉल्यूशन देख के भी समझ आ रहा है, भले टाइम लग रहा है सॉल्यूशन समझने में, बट एज़ लॉन्ग एज़ आपको समझ आ रहा है, वो ठीक है। अब जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होते हैं, उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट बने ही इसलिए कि आप उससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो, राइट? क्योंकि आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ तो चाहिए हाँ। होता है। और गेट में जैसे अपार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस, जितने भी नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, जो ट्रिकी होते हैं या पहले के अटेम्प्ट्स में नहीं आए होते हैं, जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना होता है, वो क्वेश्चन भी आई फील लाइक मोस्टली जितने भी आएँगे, सारे आपके सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और मॉक टेस्ट में कवर्ड होंगे। अगर आपने ये टेस्ट दे दिए, तो आपको गेट एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन के अलावा ऐसे कोई भी ऐसे बहुत टफ नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट आपसे खुद से बन रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, और आप उसका सॉल्यूशन देखते हो, वहाँ से आप जो चीज़ें सीखते हो, फिर उससे आपका गेट एग्ज़ाम में बेनिफिट होता है। तो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और टॉपिक वाइज़ टेस्ट जितने भी हैं, वो सिर्फ़ आप लोगों की लर्निंग के लिए है, कि आप उससे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख के कुछ न्यू कर रहे हो। उस पर्पज़ के लिए ही है ये। तो हाँ इसमें मैम, कोई भी मैं पीवाईक्यू डिमोटिवेट से लगाता नहीं हूँ, वो करना। तो हो जाता है। एंड बट हाँ, वीकली क्विज़ेस में थोड़े मार्क्स कम आते हैं, उसमें थोड़े टफ टफ हाँ। आते हैं। राइट, तो वीकली क्विज आप ऐसे देख के चलो कि ये सब मार्क्स के लिए नहीं है, इसके मार्क्स तो आप इग्नोर किया करो। इसका पर्पस ये है हाँ। कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं बाद में। लाइक अब मैं देखूँ, तो मुझे जितने भी लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो मैंने दे पाई थी, जितने भी वो, और जो मैंने एआईएमटीज दिए थे, इनकी वजह से ही मेरे गेट में मार्क्स आए थे, राइट? और इनमें से किसी में भी हाँ। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। एआईएमटीज में मेरे मैक्सिमम 63 या ऐसे कुछ मार्क्स है, 65 समथिंग, और मोस्टली में तो किसी में 40, किसी में 50। नाउ ऐसे देखो तो 100 में से कितना कम लग रहा है, बट जस्ट बिकॉज़ मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, हर क्वेश्चन मैंने रिवाइज़ किया था। एंड जो मैंने एआईएमटी दिए थे ना, उसमें भी जो पहले टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बाद में रिपीट नहीं होते थे। हर टेस्ट में कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता था मोस्टली।
तो बस उसमें से हर जस्ट मेक श्योर, जैसे अभी आप वीकली क्विज भी दे रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो, उसकी अगर मल्टीपल अप्रोच है तो सारी देखो। और अगर किसी चीज एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बार बार नहीं हो रहे तो आपको एनालाइज करना है कि आपसे क्यों नहीं हो रहे। अगर कॉन्सेप्ट कुछ आपने नया सीखा देन ऑल्सो इट्स ग्रेट, आपने सीख लिया, अब अगर वो गेट में आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वो नोट डाउन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से बार बार गलती हो रही है तो देखो कि वो क्यों हो रही है। अगर टॉपिक भूल रहे हो तो उस पे ज्यादा फोकस करो, उसे बार बार रिवाइज करो। तो उस वे में भी आपको एनालाइज करना है कि गलत हो क्यों रहा है आपसे। ओके, वैसे चलना। तो मार्क्स पे फोकस मत करो अभी मैम बिल्कुल मुझे भी। एक और चीज हाँ। पूछनी थी कि हम्म। मैथमेटिक्स अब सबसे लास्ट के लिए रख रखा है तो वो ठीक है क्या? लाइक जो गो क्लासेस का शेड्यूल है उसमें मैथमेटिक्स सबसे पहले कराई है, लेकिन मैंने हाँ, लास्ट में रखा है सी आई वुड क्योंकि अगेन से कि हाँ। मैम वो मैथमेटिक्स सबसे बड़ी है एंड उसको रिवाइज वापस रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि वो फ्रेश रहेगा एग्जाम से पहले पहले, इसलिए लास्ट में रख रखा है। सी बट मैथ्स में अगेन, मैथ्स ऐसा है नहीं कि एक ही टॉपिक है जो आप खत्म करके बाद में करोगे। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको देखना हो जैसे कोर में देख लो तो कैलकुलस बहुत छोटा मॉड्यूल है कंपेयर टू एलए। बट मतलब एलए भी लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी ये भी बड़े लग रहे हैं, बट जब आप लेक्चर्स देखोगे ना आपको बहुत आराम से समझ आएगा। तो आप लास्ट के लिए रखो या पहले के लिए रखो, द थिंग इज कि एक साथ मैथ्स करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। वो और जितने भी उसके टॉपिक है कोई भी ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि आप पहले कैलकुलस करो फिर ये आपको ये समझ आएगा, या फिर पहले ग्राफ थ्योरी करना है या पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक करना है। सारे टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है। तो आप बीच में करते रहो, जैसे मे बी आप अभी प्रोबेबिलिटी कर लो एक थोड़ा टाइम देके, या फिर आप देख लो अपने हिसाब से किसमें ज्यादा वेटेज है और ऐसा थोड़ा एनालिसिस करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बीच में कर लो। एक दो कुछ टॉपिक्स पूरा लास्ट के लिए रखोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप इकट्ठा फिर पूरी मैथ्स करो अच्छी सारे। टॉपिक वाइज करके फिर उसके पीवाई क्यूज लगा दूं। राइट राइट, क्योंकि कुछ भी ऐसे डिपेंडेंट नहीं है। आप या तो प्रोबेबिलिटी ले लो या लीनियर अलजेब्रा ले लो, क्योंकि ये आई थिंक बाकी सब में से सबसे बड़े टॉपिक्स है जिसमें सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं। तो मतलब मैंने बाकी डिस्क्रीट मैथ्स के लेक्चर्स तो मैंने नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा था, उसमें मैराथन लेक्चर्स थे तो हर टॉपिक के तीन चार ही थे, मतलब सेट के आई थिंक अराउंड 25 वीडियोस थी। पर वो मतलब टॉपिक ही इजी है तो आई रिमेम्बर सेट तो मैंने ऐसे 2 दिन में ही देख लिया था पूरा। तो ऐसे टॉपिक वाइज ही करते हुए चलो, और आप भी नोट्स नहीं बना रहे सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो। तो डिस्क्रीट मैथ्स के तो जितने भी टॉपिक है वो मतलब है थोड़े, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक है तो काइंड ऑफ थोड़े फन है, आपको चीजें समझ आएंगी। यस। कुछ रटने वाला तो इसमें बहुत है नहीं। मे बी कुछ कुछ है ग्रुप, हाँ। जैसे ग्रुप थ्योरी में है थोड़ी चीजें ऐसे याद रखने वाली। तो बीच में ही आई वुड सजेस्ट कि बीच में ही करते हुए चलो टॉपिक्स के। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, राइट, एंड के लिए मत ही रखना। ओके। कुछ भी इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, अदरवाइज मैं सीक्वेंस बता देती जो आपको लग रहा है। आई आई रिमेम्बर कि डिस्क्रीट मैथ्स में अराउंड 7 टॉपिक्स है, तो एक बार वो देख लो, टॉपिक्स लिख लो और फिर हाँ वही साथ में करते हुए चलना। ऑल राइट। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, या वेलकम। Am I audible, ma'am? हाय आयुष, यस। हेलो मैम। मैम मेरा ये डाउट था कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विदाउट बीइंग बर्नआउट, क्योंकि मेरा मैम ऐसा रहता है कि लाइक मंडे को मेरी अच्छी पढ़ाई हुई लाइक 6-7 आवर्स और सैटरडे तक अच्छी चली, लेकिन फिर 2-3 डेज का एक डाउन फेज आता है जहाँ पे मेरा स्टडी आवर्स गिर के लाइक 4-5 आवर्स हो जाता है। फिर 1-2 दिन बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, पर ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि एक लूप में हो गया हूँ मैं। हम्म, ओके। अभी आप क्या कर रहे हो, लाइक कॉलेज स्टूडेंट और व्हाट? कॉलेज में हूँ मैम, मेरा अगले महीने से 5th सेम चालू होगा। ओके, तो आप भी अभी आपका सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है। यस। एंड आपने अभी तक कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे हैं या फिर जस्ट स्टार्टेड? नो मैम, मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है, लाइक एक 2 आवर्स का बस एक लेक्चर बचा है इंटीग्रेशन का, वो बाकी है, और डिस्क्रीट ओके। मैथमेटिक्स में सेट थियरी तक मेरा हो गया है। ओके, ऑल राइट। तो हाँ, तो आपका कॉलेज कैसा रहता है यूजुअली, लाइक आपको सारे 5 डेज जाना है या फिर इट्स रिलैक्स्ड?
रिलैक्स है मैं, मतलब मेरा कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन लाइक जस्ट एग्ज़ाम आते हैं, तो उसके चक्कर में मैम हाँ थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है, लाइक 2 वीक्स के आसपास। हाँ, लाइक ठीक है, मतलब एग्जाम्स तो कितने ही होते होंगे, एक मिड सेम एक एंड सेम ही है, तो उसमें तो ठीक है, बहुत टाइम नहीं जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी बर्नआउट इज द थिंग कि वो मोस्टली हो ही जाता है बर्नआउट। इट्स नॉट लाइक कि आप देखो बहुत रिलैक्स होके तो नहीं कर पाओगे, आपको फोकस प्रेप तो करनी पड़ेगी। इसके लिए अगेन वन थिंग आई वुड से इज कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यूजुअली हमें पूरे दिन बैठ के ऑलमोस्ट पढ़ना ही रहता है सुबह से लेके रात तक। तो आई वुड से कि अगेन एक फोन में हटाने के लिए इससे बोलती हूँ, बिकॉज इट्स रियली मतलब उसका एक पढ़ाई में टाइम वेस्ट तो एक चीज है। आई गेस फोन का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा बैड इम्पैक्ट होता है। अगर आप बैठ के आधे घंटे भी रील्स देख के अगर कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, तो उसके बाद आप और ड्रेन हो जाओगे। इज इट विथ यू, लाइक आर यू व्हेन यू स्टडी, तो आपने अभी पूरा अपनी प्रेपरेशन से फोन एलिमिनेट कर दिया और यू स्टिल थिंक कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है? इफ यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली। मैम इट्स डिपेंड ऑन माई शेड्यूल, लाइक मेरे एक लाइब्रेरी है गवर्नमेंट की, तो मैं वहाँ पे ओके। चले जाता हूँ, तो मैं फ़ोन घर पे छोड़ जाता हूँ, तो तब तो इशू नहीं ओके। होता। लेकिन कभी कभी जब हाँ। मेरा मन नहीं करता लाइब्रेरी जाने का, या फिर बर्नआउट फेज चल रहा होता है, यस। तब मैं सोचता हूँ यस। घर पे रह के पढ़ लेता हूँ, लेकिन वही आप जैसे बोले कि फ़ोन के चक्कर में या फिर ओवर हाँ। थिंकिंग के कारण नहीं पढ़ पाता उतना। ओके। सी, तो इफ यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी ऑल्सो, तो आई वुड से कि आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में अपने लिए 1 आवर का टाइम निकाल के रख लो फॉर फिजिकल एक्टिविटी और समथिंग, कि ऐसे 40 मिनट्स तो यू हैव टू गो आउट फॉर अ वॉक, या मतलब थोड़ा सा एक एक्टिविटी के लिए। क्योंकि लाइब्रेरी ऑल्सो आई नो ऐसे पूरा डार्कनेस में एक टेबल होता है आपका, एंड यू हैव टू स्टडी देयर ऑल डे। सो आई कैन रिलेट, आई रिमेम्बर इन कॉलेज आई ऑल्सो यूज टू गो टू अ लाइब्रेरी। तो लाइक हाँ, बट बर्नआउट तो देखो, इट्स जस्ट दैट अ माइंडसेट, आपको एक वो प्रिपेयर्ड ही होना पड़ेगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप थर्ड ईयर को ही अपना एक अटेम्प्ट मान के दो। ऐसे मत सोचना कि अभी 2 साल है तो अभी आराम से करना है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास करने के लिए, राइट? और अभी आपने ऑलमोस्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट करा है, तो 9 बचे हैं। तो आप अभी इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि you know that you're feeling burnt out or tired ki I'm studying for so many hours, I would say try to enjoy your preparation a bit. Enjoy in the sense कि जब आप lectures देख रहे हो, तो lectures देखते हुए आप ऐसा प्रेशर लेके मत लेक्चर्स देखो कि गेट एग्जाम इतने टाइम में है और ऐसा ऐसा। तो आप बस लेक्चर्स ये सोच के दो, क्योंकि आप जितनी भी चीजें सीख रहे हो ना, वो जेन्युइनली आपके काम में आएंगी। अभी जो भी लाइक हम कितने लोग हैं, लाइक मैं ही थी, पूरा बीटेक ऐसे कंप्लीट हो जाता है, बट कोर कंप्यूटर साइंस की नॉलेज मिलती ही नहीं है। तो आप अभी जिन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, वो नॉलेज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं जब लेक्चर्स देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा लाइक एंड में जब स्पेशली मैंने गो क्लास के लेक्चर्स देखे थे, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता था मोस्टली कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ के, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था ऐसे सिस्टम वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ा। तो एक तो ये है कि इंटरेस्ट लेने का ट्राई करो, इतने प्रेशर में मत पढ़ाई करो। दूसरा ये है कि बर्नआउट होता ही है। लाइक इफ आई ऑल्सो फील कि कुछ दिन ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़ा, उसके बाद फिर बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगता है एंड थोड़ा सा लो फील होता है। बट इट्स जस्ट दैट कि उन दिन में भी आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, लाइक देयर इज नो ऑप्शन। इवन अभी आई वुड से कि मैं ऐसे डीए का कोर्स कर रही हूँ, एंड देर आर डेज की आई अगेन ऐसे कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं, बट फिर कुछ दिन ऐसे लगता है कि अब नहीं पढ़ना। बट इट्स नॉर्मल, लाइक वो सबको ही लगता है, दैट्स द कॉस्ट वी सॉर्ट ऑफ पे फॉर अ गुड रैंक, राइट? तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ऐसा कुछ है कि आप आराम से कर लोगे या फिर बर्नआउट मत फील हो। वो होगा ही, क्योंकि बहुत रिग्रेस प्रेपरेशन चाहिए होती है फॉर गेट। आपको हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको 365 डेज ऑलमोस्ट पूरा 1 साल डेली पढ़ना है, देन वो हेक्टिक तो होगा ही। बट आई कैन जस्ट टेल यू कि इट विल बी वर्थ इट। जब आपका गेट एग्जाम अच्छा जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यू गेव योर बेस्ट, तो उस दिन आपको अच्छा लगेगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए यही है कि आपको रिमाइंड कराना है कि आप गेट एग्जाम
क्यों दे रहे हो। एंड एक बार ऐसे भी सोच लो कि थर्ड ईयर है, तो आप इसी अटेम्प्ट को बिल्कुल ढंग से दे लो, ताकि उसके बाद आपके पास एक साल और रहेगा ऐसे थोड़ा कॉलेज लाइफ भी काइंड ऑफ करने का। वैसे एंजॉय तो आई वोंट से, क्योंकि आई फील लाइक अगर आप थर्ड ईयर में ही गेट देके अच्छा कर लेते हो, देन आपने ऑलरेडी अपने कॉलेज लाइफ सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर ली है। तो फॉर कंसिस्टेंसी यही है, दैट ट्राई एंजॉइंग द सब्जेक्ट्स एंड सिट, मतलब वो आपको आना ही पड़ेगा डेली बैठना, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते, यू हैव टू शो अप एवरी डे। ओके। और मैम मेरा एक और डाउट था कि जैसे आपने बोला कि हाँ। हम लोग को नोट्स नहीं बनाना चाहिए और अनोटेड नोट्स से पढ़ना चाहिए, बराबर? हाँ। तो मैम जैसे मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अब तक हम्म। नोट्स बना रहा था, और आई ऑल्सो फील ओके। लाइक कि मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। फिर मैं ये हम्म। सोचता था कि अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मेरा उससे अच्छा रिवीजन होगा। तो आई हाँ। नो इट्स, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मेंटेलिटी, बट क्या मुझे अभी आगे नोट्स बनाना चाहिए या फिर उससे ही प्रेफर करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं डिजिटल नोट्स से? सी आई वुड से कि डिजिटल नोट से ही करना, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप जो लेक्चर देख रहे हो, आप नोट्स बना के एक 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 चीज लिख रहे हो, बट उसमें ऑलरेडी वो सारी चीजें कवर्ड है। और प्रॉब्लम तब आती है जब आप, अगर ये कह सकते हो, अगर आप किसी और के नोट्स रेफर कर रहे हो, लाइक मे बी आप किसी और जो टॉपर नोट्स गिवन होते हैं, लाइक मुझे पर्सनली किसी और के नोट्स बिल्कुल समझ नहीं आते, मैंने आज तक कभी दूसरे नोट से पढ़ाई नहीं की है, तो वो एक इश्यू हो सकता है। बट एनोटेटेड नोट्स में तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपने ऑलरेडी वो सारी स्लाइड्स देखी है, तो अपने नोट्स बनाने में तो फिर भी कुछ रह सकता है। और आप कितनी चीजें लिखोगे जब उसमें ऑलरेडी सारी चीजें हैं, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स, डायग्राम, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो आई फील लाइक दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इसमें बस एक चीज है कि लेक्चर देखने के जस्ट बाद पीडीएफ तुरंत गो थ्रू कर लेना, नहीं तो बाद में आपको फिर वो मैसी लगेगा ही लगेगा। अगर आपने जस्ट एक बार देख लिया तो रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार तो हमें एनी हाउ लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने ही होते हैं, शॉर्ट नोट्स एंड में ही काम आएंगे, लॉन्ग नोट्स का एक राउंड ऑफ रिवीजन तो मस्ट है, राइट। तो लॉन्ग नोट्स में अगर आप एनोटेटेड नोट्स देख रहे हो तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, आप हर चीज रिवाइज कर लोगे, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है रिवीजन का। तो हाँ, आप एनोटेटेड नोट्स ही देखो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू मैम। यस। एंड बर्नआउट के लिए अगेन, जस्ट टू समराइज, आई वुड से कि दैट्स नॉर्मल, वो होता ही है लाइक सबके साथ। तो वो फर्स्ट स्टेप है। इफ आप डेली आके एफर्ट डाल रहे हो तो आपको एग्जॉस्टिंग लगेगा ही, ऐसे टायर्ड फीलिंग आती है, बहुत बोरिंग भी लगता है, बट उसके बाद का जो सेकंड फेज है वो यही है कि आप स्टिल आके पढ़ ही रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट लेने का ट्राई करो एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि आप एग्जाम दे ही किस लिए रहे हो, राइट। अगर ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टडी एवरी डे। बट अगर आप सिर्फ पूरा जबरदस्ती भी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट स्टिल अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप फिर बाद में उसके जो भी क्वेश्चंस सर बीच में करा रहे हैं और आप खुद से कर पा रहे हो, वो वीडियो पॉज करके आपसे खुद से सॉल्व हो रहा है और मैच हो रहा है, तो फिर आप खुद को क्रेडिट दो दैट यू आर डूइंग रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये बर्नआउट और ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली आपको लेक्चर समझ आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यस यस मैम, मेरे को लेक्चर यस। सब समझ में आते हैं, बस थोड़ा मोटिवेशन अप एंड डाउन होता रहता है। हाँ, सी इसके लिए आई कैन जस्ट से वन थिंग कि गेट एग्जाम इज लाइक एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार जब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है ना, देन आपको, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी लगा था कि अच्छा लगेगा वंस यू गेट अ गुड कॉलेज, तो ठीक है, बट वो फीलिंग अलग ही होती है। लाइक एक बार आपका कॉलेज सॉर्ट हो जाता है कि आपका एडमिशन हो गया एंड एवरीथिंग, देन उस दैट इज द बेस्ट फीलिंग। तो उसके लिए आप अभी जितना भी एफर्ट डाल रहे हो, दैट्स नथिंग। बट एक बार आपका एग्जाम जब खत्म हो जाता है एंड तब अगर आपको वो फीलिंग आ गई कि मैंने पहले अपना बेस्ट नहीं दिया था, तो आप उससे तो रिकवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। तो उसमें ना रहने के लिए कि एग्जाम के बाद आपको रिग्रेट हो, उसमें रहने के लिए आप अभी जितना भी कर सकते हो ना, वो आप लोग कर लो। दैट आई एम टेलिंग विथ एक्सपीरियंस कि जस्ट गिव योर बेस्ट। आई विल टेल यू ऑल कि मेरी रैंक पे एक तो वन क्वेश्चन आई पिक फ्रॉम चैट, which is key at 285 how I got IISc, right? So that's fair, क्योंकि like usually for general the cutoff is around 60 for uh, for general rank, but so category wise my category was general, just so you all get some idea about cutoffs. But IISc में there are some supernumerary seats for women, so 25% around. So for girls I guess about
like unless and until ki top rank mein there are many girls, tab tak because of that those seats about 400 rank tak I feel that girls would be able to get the IC till मतलब अब तक के stats के हिसाब से. Otherwise I would have gotten like IIT Kharagpur, I guess. यस. एंड इसके लिए आई टेल यू जो मैंने एग्जाम्स में मिस्टेक करी थी, 2-3 क्वेश्चन मतलब काफ़ी मेरे मार्क्स 70 मार्क्स आए थे मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन गेट एग्जाम, और मैंने आराम से मेरे हिसाब से मेरे 7 to 8 मार्क्स और आ सकते मतलब चलो 7 to 8 ना भी बोलो तो अगर मेरे 2-3 मार्क्स भी और आ जाते तो मेरी रैंक में आई गेस 150 इश क्या 150 तक तो आई जाती मेरी रैंक. तो मुझे गेट एग्ज़ाम फ़ेब में हुआ था, तब से लेके पूरा मई तक मुझे अपनी हर सिली मिस जो मैंने मिस्टेक करके आई थी एग्ज़ाम में, मैं हर दिन वो मिस्टेक्स के बारे में सोच रही होती थी, लाइक एवरी डे. अभी जब मैं फेलिसिटेशन में भी गई थी जयपुर में, तब भी लाइक देयर वाज़ नॉट अ सिंगल डे कि मैंने वो मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचा हो. बट 11th में जब काउंसलिंग का रिज़ल्ट आया एंड फर्स्ट राउंड में आई गॉट आईआईएससी, तब से लेके नाउ आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने क्या गलती करी थी. लाइक मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ सारे क्वेश्चंस. बहुत मे बी याद करने पे याद आ जाए, बट उससे पहले तक मुझे एग्जैक्ट याद था कि मैंने क्या-क्या गलत किया था और मैं क्या डिफरेंट कर सकती थी, क्योंकि एक-एक मार्क्स पे पूरे कॉलेज का डिफरेंस आ जाता है. तो आपसे अगर एग्ज़ाम में गलती हो रही है, तो वो चीज़ें आपको लिटरली नाइटमेयर्स आते हैं उसके. लाइक इफ आयुष यू आस्क्ड अबाउट द प्रिपरेशन थिंग, या फिर जिसको भी लगे ये अभी कंसिस्टेंसी का डाउट है, तो एंड में आपकी एक-एक गलती से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो उस चीज़ में तो मत ही आओ. अभी जितना प्रिपेयर करना है कर लो, एंड देन यू विल फॉरगेट ऑल दीज़ अभी का जितना भी आपको टफ फेज़ है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग वन्स यू गेट अ गुड कॉलेज. ओके. तो फॉर मेल्स इट्स अबाउट 60, 6 या 60 रैंक फॉर आईआईएससी, फॉर जनरल. उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है. ओके. हाय दीपक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Uh, Hello Pragati, या हाय. congratulations on well-deserved rank and offer from prestigious IISc. यस, थैंक यू. Some of my questions are like already well answered, या asked by members. या Brief about me. I gave last year GATE DA with job. ओके. So my subjects are covered already, but this time I took a drop. I left the job and preparing full time. ओके. Um since my subjects are already covered, so it's been long when I studied them, and revising them now is become difficult. And ओके. after gate there was a gap of 1.5 month. I wasn't ऑलराइट. studying, I did anything, I didn't revise at all. या. So my first question is how I should revise, as I already covered the या. subjects. I ओके. after March, I guess mid March, I tried revising different subject in a day, like two या. three subjects and practicing one subject. But हम्म. so doing two three subjects in a day, maybe it's not a good strategy, I feel, because make of फिर भी there was a feeling that lot is pending when I will cover, या. and revise या. picking subjects after long, या. so it was hard to recall. राइट. Maybe I'm doing wrong with the strategy that picking two three subject, or maybe I'm not wrong. It may be right strategy, but I'm doing in the wrong way. Whatever it is, you या. can guide me on that. All right. And did you give test and mock test or sub weekly quizzes or whatever there is uh, in your last attempt? Uh, yes. I started. Yeah, I did that, but I started doing this all in last 2 or 3 months only. Okay. So Yeah, is I there started anything which you, preparation. yeah, Yeah, I started preparing for gate last year as well with 3 4 month only. Like okay. I didn't started with the early month of the year, so it Okay. started at the end of the Okay. year. Yeah, And where have you completed those subjects from? go classes only. I All right, was a and that's, course enrolled student. can you just quickly like name all the subjects in DA, because I had
like not appeared for DA. That's why. Okay, there are three mathematics subject like Yeah. probability statistics, linear algebra, calculus, optimization, Okay. and Okay. two computer science subjects like programming in Python, data structure Python, Okay. DBMS, and the two Okay. AIML subjects. Okay. Like Uh, AI and ML. yeah, AIML, probability, linear algebra, calculus, and optimization, DBMS, and Okay. this Python programming data Okay. structure. Okay. Yes, got it. Did you make notes as well? Yes. All right. So if you have notes like DBMS is sort of theoretical subject, or if or AI, I think is also a bit theory is there. So for these sub, like if you, I think 2 3 subjects as a time at a time is a bit much. You still have 7 months for gate is a good amount of time. That too when you already have covered all of the subjects. That too from the best, like the good resource. So either you could just take, I would say, you can, because you've already done it, it won't take you a lot of time also, like it won't take you 1 or 2 months to complete the entire subject because you've already done it from lectures. So what you could do is just either revise it from your notes. I think you can go with one subject at a time, so you can revise it entirely. Say you take DBMS, then or you can take maximum of 2 subjects, and by two also it's not like you're doing both the subjects in a single day. You could be revising one subject for 3 4 days, maybe cover half of the subtopics, and then you could do another. So whatever works out, but I feel like maximum you should not be taking more than two. And once you finish revising one subject, whatever questions there are, or any subject wise or topic wise test with available, or a weekly quiz for that subject, like whatever test you find for those subject which you that subject that you just revised, you can give that, and parallelly you can start with another subject. And if you have covered it only once, like for example, I had done linear algebra, I've completed maths and machine learning. I'm Maths I've completed, and machine learning is almost complete for me. So initially when I did linear algebra, so once to I did watch the lecture twice because I had time after gate and I was not preparing for any exam, I was just preparing it to learn. So linear algebra in one go, like first I finished the lectures, then in revision I remember I just watched like the videos on 3x speed just to uh, you know learn everything again, because those topics were completely new, like vectors, vector space, all of those things. There were many things to learn there. That's why I watched the lecture again. So I would say that if you are having trouble in understanding the notes, then you can, for these mathematics, these topics like LA or machine learning, you can even go over the, like revisit the lecture again, because you won't have to make any sort of notes, and you won't even have to pause multiple times. It would be easier than learning the first time. So for revision you could either revisit the lectures or from your notes. If you are able to understand things from the notes, then that's good. But if you feel like you are totally forgetting the concepts, then you can go for lecture also, because that way you won't have to give much effort from your end for revising. You just have to watch the lectures and try to understand everything, and things will be revised automatically, and then you'll just have to solve whatever questions you find afterwards. So to summarize, you can pick one or two subject, either do it, either revise it, the entire notes that you have made, or from the annotated notes. Or you can, if you are finding a difficulty in understanding the topics, and you're feeling that for every topic you have to spend a lot of time because you don't remember the context, or it's difficult to understand all the questions like that in the form of notes, then you can watch the lecture, especially for these maths topics. So you can watch it on 2x speed, or 2x 3x whatever, because it's on YouTube also, so you can go till 3x, and you can just sit and try to understand everything, so everything will be revised for you. And keep very short time, like for linear algebra, calculus, these things I would say maybe keep maximum of like maybe a week max for say LA. Just keep maximum 1 week for revising. Even with lectures it should not take more than a week ideally to revise, because you've already done it once. So
that way, Yeah. because you still have time, right? There are 7 months left, so there is no point in just skipping on the revision and moving straight forward to questions, because if you are able in the even if you take 3 months to revise and solve questions, probably you will still have like 4 months to focus only on questions. So I feel like it's okay to watch lectures for a few subjects which you personally find tougher, right? That's okay, it won't take much time. For me, I'll tell, linear algebra revision of module 1, it took me about 4 4 days to completely revise it, like watching lectures and like all when I did all annotated notes for, there were total 44 lectures individually. I remember, if 1A, 1B, if we count like that, there were about 44, and Mm. there are about 47 in the course for module 2. I like remember the count also because I've revised it multiple times. So I revised about 2 to 3 times. Then I am confident on it that I can solve any question of LA now. So that comes only with revision. And even though if you feel like there are not multiple questions here for solving as there are in CS, like there are multiple topic wise and subject wise tests, then for that I feel like, but in DA lectures, sir has taken up a lot of, like he has explained every topic with questions only. So those questions are also sufficient. So PYQs plus for the common subjects you can take CS PYQs also, and then whatever sub topic wise subjects there are, those are more than enough. But yes, I think revisiting lectures would be fine. There is still a lot of time. Just make sure to not give more than a week on one subject for Okay. revising. Yeah, I do Yeah, feel so. This will work because I was missing what I was used to of, like uh, yeah, watching lectures, then making notes, and then solving question. And this time I yeah. already had notes, so I was feeling like what to do. And since there was no Yes, revision, so facing question was also very difficult. And my right. So, second, huh, yeah, yeah, yes, yes, ask. yeah. My second question was on that ground only, like as you told that you used to enjoy solving question as puzzle. Like how Yeah, can I have the same feeling while solving? Because when I face hard yes, question, I feel like not solving at all. And yeah. basically, how you faced hard questions or whichever new questions you face, like how you break down the problems. See, one complete difference I feel is that I remember when I was doing LA before gate exam, then that happens. Like even for core, because I was mainly preparing for CS only. So at that time, solving lectures, it did feel annoying because if you're not able to solve, then it does feel annoying that you have done the entire subject, you have revised also, then also why you're not able to solve. So this Yeah. like major enjoying portion came when I was prepared, like when I was doing the DA course after gate exam. So that this DA course is very fun for me because I'm not like doing it for any particular exam, so that pressure is obviously there. But what you can do is just in between the lecture na, like the first question that you asked, that if you're firstly if you jump straight up to questions, then that would be a slight of a time waste because you still have 7 months. So and watching like revising from notes is a bit boring because it's math, so how Yes. many questions you will just read and solve. So for theoretical subjects you could definitely revise from notes, but with subjects like maths, it's best to revise from lectures because you can pause the video and solve every question that's coming. So if you are able to solve, then it's good, you are able to match and you can feel good that you were able to solve this question. And if not, then just try and focus on, Continue watching. Yeah. yes, yes, and try to like see it in a way that you okay, it's fine that you were, one thing is that you were forgetting the concept, that's why you could not solve the question. So in that case also it's good, you can just revise it, you can just see how that question was solved and try to learn that topic. You can maintain another notebook where you just write all the topics that you found challenging, or the concepts that were new to you which you learned in question, right? So one is you were forgetting concept and you learned it, that this is the way to solve. Other is that Hmm. it was a completely either you didn't forget, it's just something completely new. Then also it's good because you added, as long as you find these questions before exam, that is completely okay because you learned something new. So now if that comes in gate exam, that would
be beneficial for you because you will be able to solve. And I remember when there were tough questions, so it did feel annoying because there are like multiple times there were questions which I did not even understand after going through the solutions. Like I used to sit maybe 1 hour for certain questions and I totally did not understand what was happening there. So either I used to keep it for later, that it's fine, I'll do it with fresh mind after 1 or 2 days. So many a times I did understand, but 1 or 2 times there were a few questions which I used to forget every time or just not get it. So if the count is very less, like a few questions you will encounter which are very hard to understand. So if it's just 2 or 3 which you are finding, then it's okay, you can don't think too much on that, don't waste time there, just move on and Mhm. focus on other questions and other things, right? But if normally you are not able to solve in one go, that is completely okay. As long as you understand the solution, that is good. Just look at the solution and understand from there, and if it's something different or a new trick, then just write it down. And initially if you are not able to solve things, that happens because you're just starting with problem solving. That problem solving skill will automatically develop with time. So this pressure automatically comes because you're preparing for exam, so it's a bit tough to enjoy solving questions. But like, yeah, that would be there. So just look at the solution and understand, I would say, because that's normal, right? The point of solving questions is that you learn something new. If you are solving questions which you are able to solve all of them, then you won't be learning anything new, right? And for most of the people I know, most of my friends also, so till before gate exam also, we were not sure that how we will be able to do. Before a gate exam, I was thinking, what if I forget all the concepts that I've learned? Because a lot of things we do memorize also, that this is how we solve questions. So I was thinking, what if I forget everything in the exam? So that just happens. But if in your entire preparation journey you have not taken any shortcuts and you have given effort in every question, most of which you won't be able to solve, because that's how you will learn. So that's Mm. normal, Yes, right? yes. Yeah. And one last thing that, like, I also used to do the same thing what you used to do, that like, like before solving question, just write what is given and what is asked Yeah. to solve. But I also realized that in doing this I am wasting time also, because after writing what is given and what is to solve for, and Yeah. you later come to know that okay, I'm not able to connect what is given and what is to find and how I'm gonna solve it, and you jump to the next question. But I already wasted some time in the Yeah. previous questions. How you quickly judge this question should be done later, or should I put Yes. time in that? Yes. So for that, firstly, that came to me like while through giving mock test. So what happened was that initially it did take time, but with practice, with a lot of questions, I just wrote down the numbers. Like for example, if it is maybe say mostly it was like CS questions, but say for DBMS, if there is a query, so like whatever is given, I just used to write the numbers, that you know that okay, this is given and this is what I have to find out. So if in, like I used to give, so I have the numbers on paper, that this value or like the symbols, whatever is given. So say like in computer network, there were things like proper like kind of some various types of delays were given and something was to be found out. So I just used to write the symbols in short form, like TP is given, TD is given, and I need to find this. So I used to think that whether I'm able to connect it, that okay, how, which Mm-hmm. formula to apply here, or what's the concept. So 1 or 2, eventually that time will reduce automatically. Starting may takes time. In fact, most of my time through in mock, which I realized was that it was going that it was being wasted in questions where I felt that I will be able to solve it, and I used to give like 10 to 15 10 to 15 12 minutes to that question, thinking that I'm almost there, or I'll just figure out. And then it's sort of, or ego or whatever you say, that you feel like I've given so much time already to this question, let me give some more time. So that was another problem with me, which I
fixed because my time was being wasted there. So I just look at the question. It will come with practice. Like initially you will write down everything, then slowly you will slowly, by slowly I mean still at least 2 months it will take for you to not, you won't write everything down in your head, only you will be able to visualize that these are the things given, this is what you have to find out, and then give some time. If you feel like that's completely something different which you have not solved before, then I would suggest keep it for later. But if you're doing it only for problem solving, then to give time, of course, until it's not a mock test or a time test. If you're just solving it for problem solving in some DPP or something, then to give time properly. In mock test it will come eventually, you will be able to visualize things, and you will get it. Got it. Yeah. Uh, Also for me that came with, because if there are 65 questions in the test, I used to like slowly by solving each of them. I wrote all like 1 to 65 number on a paper, and I used to like cross each of them when I did it. And whatever I learned, I used to write down in a notebook. So through those question analysis on every question, I mhm. used to think that why this went wrong, which was mostly the category that either I forgot the concept, one is that I totally never knew of this thing, third is that I knew it, I remembered also, but I could not think in that direction, that we could have twisted it here or slight modification was needed. So these, or fourth is silly mistake category. So you find all these four areas and work on each four of them eventually. For silly mistakes, you have to be more focused and attentive and not be in a rush, but at the same time maintain speed. For if you forget something, then just revise it. If it's a new concept, then also easy, you just have to like learn it, and next time you will be able to solve. But for the this category that you knew also how to solve it, but you could not think in that direction, so just focus on these questions, see how the approach went, like what you knew and how at which step you had to think it differently and understand it. So with time you will be able to solve those questions, then over one Yeah, or 2 months it will come. Yeah. got it. Could you just recall those four categories? Like, Yeah, so one was like silly mistake. One is that mhm, you forgot that concept. So you knew that you had done it, but because it was a theoretical concept, now you don't remember it. So that's mhm, a division gap. Then a third is that that's a new thing. Like for you, you didn't know of that method or of that term. You were not familiar with. That's the thing. And the fourth one is that you knew that concept. Like when you look at the solution, it's nothing that you had forgotten. It's just that you could not think in that direction. So these four things, I would say. got it. Thank you Yeah. so much. All right. And the most tricky one, I would say that the one which needs the most effort would be the one where you could not think in that direction. You knew it's not like you were forgetting it, ऐसा कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं थी, but you just could not think. So that comes with like rigorous problem solving and deep analysis. Then you will develop that problem solving thing. So yeah. Yeah, got it. All right. Thank you so Mhm. much. Yeah, welcome. Okay. So one question is in a chat. I am a 2026 graduate and I would like to ask how I can prepare for GATE DA while working full time. I'm also considering completing 6 months. So, it whether or not you should be preparing alongside your job or like leaving it is completely up to you only, right? Like that. So I can't. Just a second. Yeah, so that too, it's something that personally depends on you how much time you're able to take out. I prepared for CS alongside job only, and my routine was for weekends I used to study for the entire day, and for weekdays I used to give 1 to 2 hours in office, and uh, at least 3 hours every day on the weekdays. And it depends like till night how much I'm studying, and I had to cut down on sleep a lot. So that it depends on you, and how you should prepare is there's just like one strategy you have to follow, that you have to come if like for example in CS there are 10 subjects, so the goal is to complete all 10. And the sequence is, even for DA, the sequence is that you watch the lectures with
like the utmost focus, so that you get everything. So for watch the lectures with full focus, and just completely wholeheartedly watch the lecture. Once you're done with a subject and you move on to the next, then practice PYQ for the subject you had already done parallelly. So initially you're doing just lectures, then once the subject is complete, you pick up a new subject and you solve PYQs of the older subject along with it. You can set time like 4 hours. You have, like, if you're coming from work, then you can fix, because even if you think of completing 6 months in August, you still have entire June, like entire July and August. 2 months is a lot of time. So at least in these 2 months alongside of job, what you can do is, after you come from work, give at least 3 hours to lecture. So maybe if you can sit at 8 p.m., then 8 to 11 you are watching lectures 3 hours. Then after that, initially though, you will be just watching lectures. Once your subjects are completed, give at least 1 hour to solving PYQs of the subject you had done before. So after 11, you can take a break for half an hour, and then 11:30 till whenever you feel like you can be up, you should be solving the question for that. Just a second. So that's how I feel like you're not there in the meeting. But anyways, so that's how you should be going about it. And then if in these 2 months you're able to manage it, then you can consider whether or not you should be continuing with your job, depending on how, like, your situation. That's a personal choice. But yeah. All right. Okay. Hi, Pooja. You can ask your question. Hello, Didi. Yes. Hi. Hello. Yeah. Yeah. Hi. I started with maths, but I felt that I was doing very slow and I was not even consistent. So I switched to that Go classes schedule. So in my maths, some of the topics were left. So I was doing digital logic and Okay. C. My C programming was almost means it is done. But then digital logics, few topics were left, and then my college exams came. So right now, digital logic is left, and COA has already started. So I feel very rushed. Like my maths is left, my digital logic is left, and I have to do with the means schedule also go with the schedule. So how to manage? Right. Just a second. In which year are you? I'm in fourth year. It's just started for you, right? Yes, ma'am. Okay, so for maths, again, I would say that it is a very big subject. So that's a mental pressure you sort of get, in the end when you give 2 months to, because it will take time. I don't think you can complete maths at least before 2 months. There are so many subjects in there. So at least 1.5 month it will take, 1.5 to 2 months. So giving that much time, and then you are not able to complete even one, like almost just one subject you do. So that feels like a lot of pressure. So again, I would ask you to start with the core subjects initially. How much time do you have to again give in college? Is it hectic? Do you have to go every day for 5 days? No, ma'am. No, ma'am, not that much hectic. Okay, then it's cool. So you can just start with there's not much ordering also in subjects. It's just that do TOC first, then compiler design, and for digital logic, and then COA. Apart from that, there is no dependency. So I would suggest you to pick one like tougher subject, and one which you find slightly easier, and or just firstly focus on watching lectures. So for these two also, you don't have to watch lectures for both these subjects in the same day, because that will be slightly confusing. So maybe if you're doing COA for 3 days, or digital logic for 3 days, then if you feel bored, then you can pick maybe DBMS or something interesting for the next 2 to 3 days. So like that, you can pick two subjects at a time, because in that way, you will almost be completing two subjects together, and then you can pick two. So your speed can be maintained a bit this way, because if you just do one subject, that does get slightly boring. So I'm sorry, earlier I couldn't
hear what you were saying. So, have you completed any subject entirely yet? Can you repeat? Have you completed any subject? How many subjects have you like entirely completed? Ma'am, only say if I say, because in maths Yeah. also Yes. Yes. subjects are left. And DL, that sequential circuit is left. So I would not Okay. say that DL also covered. Right. So, okay. So for maths, again, now if you're almost done with it, then it's different. But for anyone else, for maths, I will highly recommend not to do it in one go, especially when you have just like 1 year to prepare, because it's a very lengthy subject and all the topics are not really even related to each other. So you can pick up topic wise. Like, firstly, you can do linear algebra, or you can take calculus first, then after a month you can do linear algebra, then you can do probability, and the topic of discrete mathematics are comparatively easier to understand, like set and all we have studied earlier also, so it won't be that tough. But if you have already now completed with it, then still there are 7 months, you don't need to feel panicked, but pick two subjects at a time. So firstly, complete digital logic if it's almost about to be completed. Then start, there are 10 subjects if you count, like take maths as one, DM and EM, just take it at one. So there are 10 subjects you need to do. So one you're about to complete, which two you're about to complete, right? Maths and DL. So now you pick, focus on completing DL, and also start with a new subject, whatever you find, whatever you want to do, whatever you have slightly interested, and maybe you can take computer network, like take any subject because they are not really dependent. So pick a subject, and once you're done with digital logic, then start another subject, because you should be doing two parallelly, right? And then solve all the PYQs for digital logic, like because that's what you did earlier. So now say you're picking up computer networks, so with it's slightly different from digital logic, so maybe you can take that. So once you're starting with now, do computer networks, and once your digital logic is complete, then along with the lectures of computer network, do PYQs of DL. And also for C programming, make sure you do all the PYQs. There are more than 100, 110, 20 something questions are there for C programming. So make sure to do all the PYQs along with the new lectures. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, so that's it. Right, just a second. Okay. Yes. Sorry. Just a second. I don't think I can hear you, Oh, Prashant. am I audible now? Yeah, yeah. Is it better now? Yes, yes. Now I can hear you. I just wanted to understand, like, throughout the process, whether anywhere I'm a person with a very less attention span towards lectures. Yeah. So some topics I prefer reading. So digital logic I prefer reading. So throughout your process, were there any topic or any subjects you have prepared, apart from Go classes, you have referred to any other external resources, be it reading textbooks, and then like any other external NPTEL courses or anything as such? No, actually, firstly though, I did not. I wasn't preparing from Go classes earlier, but I was studying from YouTube anyway. So, in Mhm. my preparation journey, I did not use any resource apart from YouTube lectures. Like, I studied everything from lectures itself, and I had a book for PYQs. That's it. So apart from Mhm. that, yes, I didn't use any textbooks. And like what I feel is that textbooks are definitely important, like for now, in terms of if I say MTech, then now our resources will eventually shift to these only. We'll have to eventually you'll have to read books and research papers and everything, so you can't rely on lectures anymore now, like once you begin with your MTech. But yes, for the grade preparation, I feel like lectures are pretty good, because you don't have to, in books, textbooks, there is everything. So it's but for lectures, it's kind of uh, designed for gate specifically. So Right. that way, I would say that your time is not being
see, reading textbooks is definitely not a waste of time. You learn a lot from books. I feel like more than lectures, you'll be learning from these resources. But for GATE exam specifically, I feel like lectures are a bit better because you won't have to give time in anything extra. So you have all the resources customized for GATE exam specifically. So there is no need as such to read any textbooks. It's not like you will be missing out on anything if you are not reading from other resources, or you will be gaining anything extra for GATE specific if you read the resources. So in terms of just GATE specific, I prefer lectures personally because everything is like it's 100% complete in itself. Got it. Yeah. So yes. All right then. There's just one last question in the chat which I will take. PYQs for each subject. So there are like I had a book from because I just searched like a topic wise PYQ book. So I found, I think there's one from like Gate Overflow also, you can find topic wise questions. But since earlier I did not know about Gate Go, so I took one from Made Easy. But like every coaching has these books, or online there are PDFs where you will find topic wise questions and solutions. For me, I had a book from Made Easy where there were all 10 subjects in one book, and they were topic wise, and there were all the questions initially, and towards the end there were answers as well as solutions. Now, a lot of those solutions were wrong also, but like I eventually had to search them up online. But at least the question sorting was done. You can find it anywhere, just look it up online. Almost every coaching has one. Okay. All right, everyone. Thank you for joining, and best of luck for your preparation. See you on uh, see you next week, hopefully. I have time until college starts. So basically, I take it. I am available for mentorship sessions on mostly Tuesdays and Fridays according to my schedule. So how I go about it is that till the time there are people joining and you all have questions, I am available till at least 2 to 4 weeks more. So you can join and ask doubts, whatever you have. All right, bye. For now, I'll end the session. Thank you.